And welcome back to Your Thoughts Are Valid, and I hope you all are doing great. So, आज के इस वीडियो में we will cover frontal lobe in detail. So, like जितने भी इसके functions हैं, different parts हैं, we will study all those in detail. So, if you will be having any doubt at the end about frontal lobe, anything related to it, we will also cover about the disorders or dysfunctions which are caused due to damage in frontal lobe. सो अगर इन टॉपिक्स में से किसी में भी किसी भी टॉपिक में कोई भी इशू आए तो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो because to cover all the functions of all the four lobes of brain is very necessary and we should do this in detail. So let's start with the video. So let's see. In the picture, you can see frontal lobe substructures. So here in this picture, only main parts are shown. The parts which we actually need to study in detail. So the yellow one is premotor cortex, the green one is motor cortex, the blue one is prefrontal cortex, and there is this purple सा छोटा सा part which is Broca's area. So let's study. जो फ्रंटल लोब होता है वो ब्रेन लोब का जितने भी ब्रेन लोब्स है उसमें से लार्जेस्ट लोब होता है. चार लोब होता है एंड फ्रंटल लोब इज द लार्जेस्ट. It makes like one third of the cerebral cortex. Frontal lobe makes one third of it. और ये कहाँ लोकेटेड होता है? Anterior anterior cranial fossa of the skull and rests against the orbital plate of the frontal bone. Okay, so it is behind our forehead and it extends from the very front of the brain and it reaches back to the central sulcus, which is the central fissure, and laterally to the central lateral sulcus, which is lateral fissure. About central sulcus and lateral sulcus, we have studied those in cerebral cortex wala video, which is again very important video which you should watch before moving on to this one. So yes, only then you will be able to understand the concept parts. So this line, this is the central sulcus. Okay, this one is the central sulcus, and the lateral sulcus is this one. It is this one. So I hope this is clear, but please do watch that cerebral cortex wala video pehle before moving on to this one. So yeah, moving on, the area between the central and precentral sulci is known as the motor area. Okay, so central sulcus we know what is it, and the precentral sulci that is known as motor area. And what does it do? It is responsible for controlling voluntary body movements. The remaining portion of the frontal lobe is involved in various cognitive functions, including thinking, feeling, imagination, and decision making, contributing to complex higher order mental processes. Let's move on to functional anatomy of frontal lobe. तो हम फंक्शनल लोब की जो एनाटॉमी है उसको हम डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन उनके स्पेसिफिक फंक्शंस और लोकेशंस. पहला है डॉर्सोलेटरल एस्पेक्ट जिसमें जो कि एसोसिएटेड होता है विद अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस जैसे कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मोटर कंट्रोल एक्सेट्रा. मीडियल एस्पेक्ट जो कि इन्वॉल्व होता है इमोशंस में, पर्सनालिटी में और सोशल बिहेवियर में. और इंफीरियर ऑर्बिटल एस्पेक्ट जो कि इन्वॉल्व होता है सेंसरी इंटीग्रेशन और डिसीजन मेकिंग में. And here you can see some of the functions of frontal lobe. Uh, these include motor control, thinking, memory, reasoning, self-control, maintaining social expectations, planning, and abstract thinking. Then moving on to motor cortex. Let's study first about motor cortex. Here you can see which one is the yellow part is the motor cortex. So let's study about that in detail. सो मोटर कॉर्टेक्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है प्लानिंग के लिए, इनिशिएटिंग के लिए और वॉलेंट्री मूवमेंट्स की कंट्रोल को वॉलेंट्री मूवमेंट्स कंट्रोल करने के लिए. और इसको हम सेवरल एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं मोटर कॉर्टेक्स को. और हर किसी का अपना रोल होता है. जैसे एक होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, what it is responsible for voluntary movements के execution के लिए. It plays a central role in motor control with specific areas corresponding to different body parts. ठीक है. Then there is premotor cortex. Premotor cortex किस लिए होता है? That is involved in planning,
एंड कोऑर्डिनेटिंग मोटर मूवमेंट्स। इसका जो रोल होता है वो ऑर्गेनाइज करने में होता है और प्रिपेयर करने में होता है स्पेसिफिक एक्शंस। और फिर होता है सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। दिस इज essential फॉर कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स, जैसे कि स्पीच प्रोडक्शन या बाय मैनुअल टास्क। फ्रंटल आईलिड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग आई मूवमेंट्स, जिससे हम अपना गेज और फोकस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे मतलब शिफ्ट कर पाते हैं। देन देयर इज वन ब्रोका स्पीच एरिया विच इज लोकेटेड इन द लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ फ्रंटल लोब, और ब्रोकाज एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज प्रोडक्शन और स्पीच। ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए यूज होता है, एंड ऑल्सो इट प्लेज अ की रोल इन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ओके, so primary motor cortex, premotor cortex, supplementary motor cortex, frontal eyelid, Broca's speech area, ये motor cortex के important सब parts हैं, ठीक है। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का क्या फंक्शन होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट। प्री मोटर का क्या होता है? प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मोटर मूवमेंट। सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स का क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट। फ्रंटल आईलिड का कंट्रोलिंग आई मूवमेंट्स, और ब्रोका's स्पीच का लैंग्वेज प्रोडक्शन एंड स्पीच। देन प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जो होती है, अब उसको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो इनपुट क्या है? इट गैदर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जैसे कि थैलेमस, बेसल गैंग्लिया, सेंसरी पाथवेज एंड प्री मोटर कॉर्टेक्स। और ये जो इनपुट्स होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं क्रिटिकल डेटा मोटर कंट्रोल के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए। आउटपुट क्या होता है? ये मोटर सिग्नल भेजती है ब्रेन स्टेम को, स्पाइनल कॉर्ड को, जिससे कि कंट्रोल, मतलब बेसिकली जिससे हम वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स कर पाए। ये जो आउटपुट पाथवे होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है ट्रांसलेट करने के लिए मोटर कमांड्स को फिजिकल एक्शन में। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स। ये प्लान करती है, इनिशिएट करती है और कंट्रोल करती है मसल मूवमेंट को, ट्रांसलेट करके हमारे इंटेंशन को फिजिकल एक्शन में। अब अगर लेजन हो जाए इस प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में, तो क्या होता है? स्पेसिफिक मोटर डेफिसिट्स हो जाते हैं, जैसे कि मसल टोन में चेंज होना, या फिर मोटर कंट्रोल उतना ना होना, या फिर फाइन मोटर स्किल्स से ना कर पाना, जिसमें फाइन मोटर स्किल्स रिक्वायर्ड होती है जिन एक्टिविटीज में, वो ढंग से ना कर पाना on the opposite side of the body, or such lesions can significantly impact an individual's motor abilities and control. What do you mean by opposite side of body? इसका मतलब कि अगर लेफ्ट फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम है, तो राइट साइड जो है बॉडी की, उससे जो हमें मोटर मूवमेंट्स करने होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स, उसमें प्रॉब्लम आएगी। और अगर राइट फ्रंटल लोब में प्रॉब्लम हुई है, तो लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी से फाइन मोटर मूवमेंट्स करने में प्रॉब्लम आएगी। मूविंग ऑन टू प्री मोटर कॉर्टेक्स, इसका क्या रोल होता है? ये थैलेमस, बेसल गैंग्लिया और सेंसरी कॉर्टेक्स से इनपुट रिसीव करता है, और ये इनपुट्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं मोटर कंट्रोल के लिए। आउटपुट क्या है? ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को सिग्नल भेजता है, किसको? प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को। किससे कनेक्ट करता है इसको? जो कि लाइक दीज टू आर कनेक्टेड, ठीक है। तो ये प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को सिग्नल भेजता है, और ये जो आउटपुट पाथवे होता है, ये क्रूशियल होता है मोटर फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए। अब इसका फंक्शन क्या होता है? प्री मोटर कॉर्टेक्स जो होती है, वो रोल प्ले करती है मोटर प्रोग्राम्स और को स्टोर करने में और को कंट्रोल करने में पोस्चरल मूवमेंट्स को। ये प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होती है, प्रिपेयर करती है बॉडी को एक्शन लेने के लिए, एंड कोऑर्डिनेट मसल ग्रुप्स फॉर स्पेसिफिक टास्क। अगर इसमें लेजन होता है, तो क्या होता है? देयर इज मॉडरेट वीकनेस इन प्रॉक्सिमल मसल्स ऑन द कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब उतने अच्छे से हम फाइन मोटर टास्क वगैरह नहीं कर पाते, या फिर उतना अच्छा मसल कंट्रोल नहीं होता अपोजिट साइड ऑफ बॉडी में। डाटा आई ऑलरेडी एक्सप्लेन किया अपोजिट साइड से यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो दिस कैन इम्पैक्ट द एबिलिटी टू perform coordinated purposeful movements, and it may lead to difficulties in maintaining posture and balance. So this is about premotor cortex. Then supplementary motor cortex, ये किससे इनपुट रिसीव करती है? सिंगुलेट जाइरस से, थैलेमस से, सेंसरी कॉर्टेक्स से और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से। और ये जो इनपुट्स हैं, ये असेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर मोटर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन।
आउटपुट क्या है, ये सिग्नल देती है दोनों को, प्री मोटर कॉर्टेक्स को भी और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को भी, जिससे मोटर एक्शंस कोऑर्डिनेट हो पाए। इसका फंक्शन होता है कि ये प्रिपेयर करती है मूवमेंट के लिए। इसका रोल होता है प्लानिंग में और ऑर्गेनाइज करने में कॉम्प्लेक्स पर्पसफुल मूवमेंट, एज वेल एज फॉर्मेशन एंड रिट्रीवल ऑफ प्रोसीजरल मेमोरी विच इज एसेंशियल फॉर लर्निंग एंड एग्जीक्यूटिंग सिक्वेंशियल टास्क। अगर इसमें लिजन होता है तो क्या होता है, बहुत सारे वेरियस और स्पीच रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि म्यूटिज्म विच मीन्स इनएबिलिटी टू स्पीक, akinesis which means lack of voluntary and non-spontaneous speech. These deficits can significantly affect an individual's ability to initiate and execute planned movements and to communicate effectively. Okay. Then moving on to frontal eyelid, ये रिसीव कहाँ से करती है इनपुट, पेराइटल कॉर्टेक्स से, टेम्पोरल पोस्टीरियर कॉर्टेक्स से और पेराइटल कॉर्टेक्स से। ये जो इनपुट्स होते हैं ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन देते हैं रिलेटेड टू विजुअल प्रोसेसिंग और आई मूवमेंट। ये सिग्नल प्रोवाइड करती है डिफरेंट एरियाज को, जैसे कि कॉर्डेट न्यूक्लियस, सुपीरियर कोलिकस, कॉलिकुलस एंड पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन. This is not that important to remember the name. Just remember the function of these sub parts of motor cortex. Yeah. Then function क्या होता है? It plays an executive role in selection of visual targets and initiation of eye movements. तो ठीक है, सिलेक्शन भी यही करते हैं कि इस वक्त कहाँ पे फोकस करना है, और वही फिर मूव कैसे आई मूवमेंट होगा, उसका इनिशिएशन, उस उसमें भी इसी का रोल होता है, पर्टिकुलरली सर्किट्स विच मीन्स रैपिड आई मूवमेंट बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स. It commands and coordinates eye movement to focus on specific objects or locations. अगर यहाँ पे लेजन हो जाए फ्रंटल आई फील्ड में, तो क्या होगा, डिस्टिंक्ट पैटर्न्स ऑफ आई डेविएशन फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रक्टिव लेजन्स कैन लीड टू इप्सिलेटरल आई डेविएशन, मतलब सेम साइड, मतलब अगर लेफ्ट वाला डैमेज हुआ है फ्रंटल लोब का, फ्रंटल आईलिड वाला पार्ट, उसी साइड का जो आई, इप्सिलेटरल मींस आई डेविएशन, उसी पार्ट का अगर लेफ्ट में हुआ है तो लेफ्ट साइड का ही आई मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी. while irritating lesions can cause contralateral eye deviation. ठीक है, डिस्ट्रक्टिव लेजन से इप्सिलेटरल होता है और इरिटेटिंग लेजन से कॉन्ट्रालेटरल होता है, और ये जो डेविएशंस होते हैं ये इम्पैक्ट करते हैं इंडिविजुअल की एबिलिटी टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट देयर आई मूवमेंट. देन ब्रोका's स्पीच एरिया, ये वर्निकेज एरिया से इनपुट इसको मिलता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए, और ये इनपुट अलाउ करता है ब्रोका's एरिया को प्रोसेस करने के लिए और ट्रांसलेट करने के लिए लैंग्वेज को स्पीच में. आउटपुट क्या होता है, ये सिग्नल प्रोवाइड करता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स को, जिससे कि स्पीच रिलेटेड मूवमेंट एग्जीक्यूट हो पाए. फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली स्पीच प्रोडक्शन में ही इन्वॉल्व होता है, particularly in the dominant hemisphere of the brain, and it plays a crucial role in formulating and articulating spoken language. In the non-dominant hemisphere, it contributes to the emotional and melodic aspects of speech, such as tone and intonation. ठीक है, तो जो डोमिनेंट हेमिस्फेयर होता है उसमें इसका फंक्शन होता है स्पीच प्रोडक्शन का, फॉर्मुलेट करने का, आर्टिकुलेट करने का स्पोकन लैंग्वेज, और नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर में इट कंट्रीब्यूट्स टू इमोशनल एंड मेलोडिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि टोन और इंटोनेशन. देन अगर इसमें अगर वो हो जाए, डैमेज हो जाए, तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब कोई लिजन हो जाए ब्रोकाज एरिया में, तो उसको हम, एक कंडीशन होती है जिसको हम मोटर अफेजिया बोलते हैं, जिससे क्या होता है, इंडिविजुअल्स खुद को स्पीच के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पाते. इससे लैंग्वेज में डिफिकल्टी आती है, फ्लुएंसी में, ग्रामर में, और एडिशनली कुछ इंडिविजुअल्स मोनोटोन स्पीच एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि जिसमें कि नॉर्मल इमोशनल या मेलोडिक कंपोनेंट्स नहीं होते स्पोकन लैंग्वेज के, बेसिकली दे स्पीक लाइक रोबोट्स. ओके, सो दिस वाज अबाउट ब्रोका's स्पीच एरिया. देन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, अब हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को डिटेल में पढ़ते हैं. तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं डॉर्सोलेटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. तो हमने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहाँ कहाँ देखा था,
सो द ब्लू पार्ट इज द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अभी हमने येलो पार्ट पढ़ा है, मोटर कॉर्टेक्स, और ग्रीन पार्ट पढ़ा है, सॉरी ग्रीन और येलो पार्ट पढ़ा है, मोटर कॉर्टेक्स और प्री मोटर कॉर्टेक्स। अब हम पढ़ेंगे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। मोटर हम पढ़ चुके हैं, प्राइमरी मोटर, प्री मोटर, सप्लीमेंट्री, फ्रंटल आइलेट, ब्रोकास। अब हम पढ़ेंगे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इन डिटेल। तो इसमें जो डॉर्सोलेटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए और कॉग्निटिव कंट्रोल के लिए। वर्किंग मेमोरी, दिस एरिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन वर्किंग मेमोरी। इससे क्या होता है, इंडिविजुअल्स टेम्परेली होल्ड कर पाते हैं और मैनिपुलेट कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को टास्क के लिए, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग। देन कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि ये फैसिलिटेट करता है स्विच करना डिफरेंट टास्क के बीच में, एंड मेंटल सेट्स विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अडेप्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। Then planning and organization. It is responsible for planning and organizing complex actions and sequences. Then inhibition, it helps in inhibiting inappropriate responses and regulating behavior. Then there is medial prefrontal cortex. It is responsible for social cognition and self-referential processing. Emotional regulation में क्या होता है, ये involved होता है regulate करने में emotional responses और integrate करने में emotional information को. Theory of mind, it basically plays a role in understanding mental states and perspective of others, जो कि social interaction के लिए important होता है. Self awareness, it contributes to self-awareness, self-evaluation, and self-reflection. Then social decision making, social judgment or decision के लिए this is responsible. Then orbitofrontal cortex, it is responsible for reward and punishment processing, which guides decision making. Then it also plays a role in controlling impulsive behavior and inhibiting inappropriate responses. And the last one is social and emotional processing, which is important for social interactions. Then pathways, input output function of different parts of prefrontal cortex. पहला कौन सा है, orbitofrontal cortex. So it is considered a part of limbic system which is associated with emotions, motivation, and memory. Its functions include processing emotional input, regulating arousal level, and suppressing distracting signals. This region plays a role in emotional processing and decision making by integrating sensory information and emotional responses. अगर इसमें लेजन हो जाए तो क्या होता है, बिहेवियरल और इमोशनल चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि मूड स्विंग बहुत होने लगते हैं, या फिर सोशल बिहेवियर उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता, खुद को हम कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल कम होता है बेसिकली। अटेंशन मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, देन बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होती है। तो ये चेंजेस रिफ्लेक्ट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्बिटल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन इमोशनल एंड बिहेवियर कंट्रोल। ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा था प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के, जो तीसरा पार्ट हमने पढ़ा था ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स में, दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल एंड इमोशनल प्रोसेसिंग। तो उसी का यहाँ पे हमें पता चल गया है मेजर रोल। Then dorsomedial prefrontal cortex, it is involved in functions related to motivation and initiation of activities. It plays a role in driving an individual's willingness to engage in various tasks and activities. और अगर इसमें डैमेज या लेजन हो जाए तो बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि एपैथी, विच मीन्स कि कोई इंटरेस्ट या एंथुसियाज्म नहीं रहेगा इंसान में। देयर इज वेरी लो ड्राइव टू डू एनीथिंग, डिक्रीज हो जाती है बेसिकली हमारी जो भी ड्राइव होती है चीजें करने की। देन एकाइनेटिक एब्यूलिक सिंड्रोम, जो कि एक कंडीशन होती है जिसमें ना तो मोटिवेशन होता है, ना ही इंसान कोई एक्टिविटी इनिशिएट कर पाता है। और सीवियर केसेस में म्यूटिज्म, बेसिकली इनएबिलिटी टू स्पीक, बट ये बहुत सीवियर केसेस में होता है। और ये चेंजेस रिफ्लेक्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डॉर्सोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन मोटिवेटिंग एंड इनिशिएटिंग गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। Then dorsolateral prefrontal cortex, it is responsible for monitoring and adjusting behavior using cognitive function known as working memory. Working memory allows individuals to hold and manipulate information temporarily for tasks like problem solving, planning, decision making. और अगर इसमें lesions होते हैं तो डेफिसिट आ जाता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन में, जैसे कि हाई लेवल कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के लिए नेसेसरी होती है।
It may include disinterest or emotional reactivity, या फिर difficulties with attention to relevant stimuli. In a sense, this region plays a crucial role in cognitive control and the regulation of behavior. Then let's learn something about neurotransmitters. अभी इसमें हम ट्रैक्स के बारे में पढ़ेंगे. पहला है डोपामिनर्जिक ट्रैक, देन देयर इज नॉर एपिनेफ्रिन ट्रैक, देन सेरोटोनिन ट्रैक. ठीक है, उसके बाद हम सिंड्रोम्स पे आएंगे, बट पहले ये ट्रैक्स पढ़ते हैं. तो ये जो ट्रैक है डोपामिनर्जिक ट्रैक, ये ओरिजिनेट होता है वेंट्रल tegmental एरिया से, विच इज इन द मिड ब्रेन, विच इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डोपामाइन प्रोडक्शन. डोपामिनर्जिक ट्रैक जो होता है वो दो मेन एरियाज में प्रोजेक्ट करता है. पहला होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि मीजोकॉर्टिकल ट्रैक्ट बनाता है, और सेकंड है लिम्बिक सिस्टम जो कि मीजोलिम्बिक ट्रैक्ट बनाता है. और ये बहुत क्रूशियल होता है ब्रेन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए. डोपामिनर्जिक ट्रैक्ट को हम एसोसिएट करते हैं बहुत सारे फंक्शन से, जैसे कि रिवॉर्ड पाथवे को रेगुलेट करना, मोटिवेशन रेगुलेट करना, देन स्पॉन्टेनिटी, अराउजल. डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि ये इन्फ्लुएंस करता है फीलिंग्स ऑफ प्लेजर एंड रीइंफोर्समेंट एज वेल एज मोटिवेशन टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शंस. ये जो ट्रैक्स होते हैं ये एसेंशियल होते हैं फॉर मेंटेनिंग हेल्दी इमोशनल एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग. देन नॉर एपिनेफ्रिन ट्रैक, ये ट्रैक ओरिजिनेट तो करता है लोकस सिरिलियस से जो कि ब्रेन स्टेम में होता है और लेटरल ब्रेन स्टेम टेगमेंटम में होता है. ये प्रोजेक्ट करते हैं इंटीरियर कॉर्टेक्स में, इंक्लूडिंग एरियाज इन फ्रंटल एंड प्री फ्रंटल रीजन्स. नॉर एपिनेफ्रिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अलर्टनेस में, अराउजल में, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में, सोमैटो सेंसरी इंफॉर्मेशन में. इट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग वेकफुलनेस का स्टेट एंड इनहेंस करने के लिए कॉग्निटिव फंक्शंस जो कि सेंसरी परसेप्शन से रिलेटेड होते हैं और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से. नॉरएपिनेफ्रिन की न्यूरोट्रांसमीटर होता है टेंशन और अलर्टनेस को रेगुलेट करने के लिए. एंड द लास्ट वन इज सेरोटोनिन ट्रैक्स व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम रेफरी न्यूक्लियाई इन ब्रेनस्टेम एंड इट सर्व्स एज प्राइमरी सोर्स ऑफ सेरोटोनिन प्रोडक्शन इन ब्रेन. ये ट्रैक्स प्रोजेक्ट करते हैं टू न्यूमरस फोर ब्रेन स्ट्रक्चर्स जो कि अलाउ करता है सेरोटोनिन को टू मॉड्यूलेट वेरियस ब्रेन रीजन्स. व्हाइल सेरोटोनिन हैज अ रिलेटिवली माइनर रोल इन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है सेवरल फंक्शंस में, जैसे कि स्लीप रेगुलेट करना, मूड रेगुलेट करना, एंजाइटी मैनेजमेंट, फीडिंग बिहेवियर. इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद फीलिंग्स ऑफ well-being and is involved in the regulation of emotional states and behaviors. Serotonin also plays a role in the sleep-wake cycle and can influence appetite and feeding behaviors. Now let's move on to frontal lobe dysfunctions और syndrome. तो dorsolateral frontal cortex, इसमें अगर लेजन्स होते हैं तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये कवर कर चुके हैं. कि क्या होगा, एपैथी हो जाएगी, पर्सनालिटी चेंजेस हो जाएंगी, आएंगे थोड़े. देन एबुलिया विच इज लैक ऑफ विल पावर एंड डिफिकल्टी प्लानिंग और सिक्वेंसिंग. वर्किंग मेमोरी डेफिसिट भी हो सकता है, either फॉर वर्बल इंफॉर्मेशन और स्पेशल इंफॉर्मेशन. अगर फ्रंटल ओपर्कुलम में लेजन हुआ है, डैमेज हुआ है, तो क्या होगा, इट कैन रिजल्ट इन ब्रोकाफेजिया एंड डिफिकल्टीज विद verbal retrieval. Right opercular lesions can lead to expressive episodia, which affects the emotional and melodic components of speech. Orbitofrontal cortex में अगर हुआ है तो ये भी हम कवर कर चुके हैं. It can lead to disinhibition, emotional lability, memory disorder and personality changes. Superior mesial lesions अगर हुए हैं तो it can result in akinetic mutism, जहाँ पे इंसान spontaneous movement और speech lack करता है. और inferior mesial lesion, uh, it can tend to cause anterograde or retrograde amnesia and confabulation, which is the fabrication of false or distorted memories. Okay. Then moving on to clinical picture, what are the common symptoms which occurs when there is damage in frontal lobe? पर्सनालिटी में काफी चेंज देखने को मिलता है. देन देर इज लैक ऑफ इनिशिएशन एंड स्पॉन्टेनिटी, और बहुत ही स्लगिश रिस्पॉन्सेज होते हैं बिकॉज स्पीच प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है. देन कुछ केसेस में हाइपर एक्टिविटी और रेस्टलेसनेस होती है. यूफोरिक मूड होता है, ऑफन इनकॉन्ग्रुएंट विद द पेशेंट सिचुएशन. irritability and outburst, impairment in fine sensory perception, then impaired judgment and the inability to plan or follow through with ideas. देन कॉज क्या हो सकता है फ्रंटल लोब डिसफंक्शन के?
mental retardation, somatic brain injury, brain tumor, degenerative dementia like Alzheimer, या फिर dementia with Lewy bodies or Parkinsonian dementia, frontotemporal dementia, then cerebrovascular disease, schizophrenia, then major depression, multiple sclerosis, acute intoxication with recreational drugs or alcohol, then frontal lobe epilepsy or seizures. So ये किसी में भी हो सकता है. It affects both males and females. Based on large series of cases, average age जो होती है frontal lobe epilepsy की वो usually 28.5 years होती है. Or the age at which epilepsy symptoms first manifest is approximately 9.3 years for those with left frontal epilepsy and 11.11 1 years for those with right frontal epilepsy. Patients with frontal lobe seizures may present with atypical behavior or motor manifestations that are not immediately recognizable as seizures. Seizures originating in frontal lobe may be associated with facial grimacing, vocalization, or temporary speech arrest. Viscerosensory symptoms and intense emotional feelings are often reported. Motor activity during these seizures can involve pelvic thrusting, pedalic movements, or thrashing. Vocalization such as laughter or crying may accompany these seizures. ठीक है, तो ये क्लिनिकल पिक्चर हो गई. ठीक है, कौन सी क्लिनिकल पिक्चर हो गई अगर देर इज डैमेज इन frontal lobe, not damage but epilepsy or seizure. What are some of the differential diagnoses involved when you are diagnosing frontal lobe epilepsy or seizure? What could be the differential diagnosis at that time? First one is absence seizures. Then second is periodic limb movement disorder. ठीक है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पहले तो यही हो गया कि मतलब कि अलग कर देना ये पार्ट कि सिजर नहीं हुआ है. देन सेकंड वन इज पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर, क्योंकि उसके भी सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं. देन साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सिजर्स भी हो सकते हैं. देन स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर भी हो सकता है और टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी भी हो सकती है. तो ये सब शुड बी देयर व्हेन वी आर डिफरेंशियली डायग्नोसिंग फ्रंटल लोब एपिलेप्सी और सिजर. So expressive or Broca's aphasia is typically caused by damage or developmental issues in anterior regions of brain, particularly left posterior inferior frontal gyrus, जिसको हम Broca's area बोलते हैं. इंडिविजुअल्स जिनको एक्सप्रेसिव अफेजिया होता है वो यूजुअली वो ग्रामर मतलब उनके जो सेंटेंसेस होते हैं वो उनकी ग्रामर ठीक नहीं होती है. एंड दे मेक स्पीच डिफिकल्टीज टू इनिशिएट देयर इज स्पीच डिफिकल्टी टू इनिशिएट नॉन फ्लुएंट लेबर्ड एंड हॉल्टिंग. राइटिंग भी चैलेंजिंग हो जाती है. एंड देन देयर इज दिस इंटोनेशन एंड स्ट्रेस पैटर्न्स. तो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो काफी फ्रेगमेंटेड होती है और जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है वो काफी पुअर होता है. डिस्पाइट दीज डिफिकल्टीज दे कॉम्प्रिहेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर इंटरप्रिटेशन ऑफ लैंग्वेज वो सब्सटेंशियली इम्पेयर्ड हो जाता है. क्यों? क्योंकि सिंटेक्स और फ्रेज स्ट्रक्चर डेफिसिट होता है. देन पेशेंट जो कि रिकवर करते हैं एक्सप्रेसिव अफेजिया से, दे कैन एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन एक्सप्लेनिंग दैट दे न्यू व्हाट दे वांटेड टू से बट couldn't express themselves fully. Then residual deficits in language and communication may persist even after some improvement. Then testing for frontal lobe function. What test can be used to diagnose that? There is this Wisconsin card sorting test जो कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और सेट शिफ्टिंग असेस करती है. इट इन्वॉल्व सॉर्टिंग कार्ड्स अंडर डिफरेंट रूल्स एंड शिफ्टिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन फीडबैक. Measures abstract reasoning ability and the ability to adapt cognitive strategies to changing conditions. Typically, left frontal lobe is more involved than right frontal lobe. Then second one is trail making test. It evaluates visual-motor tracking, conceptualization, and set shifting. It involves connecting letters or number in a specific order as quickly as possible. Different levels of difficulty assess various cognitive functions.
including visual search speed, processing speed, mental flexibility, and executive function. It measures the ability to shift cognitive set and adapt to changing tasks. And the last one is the Stroop color and word test. It assesses attention and set shifting. It measures the ability to inhibit cognitive interference. Involves reading color names printed in incongruent ink colors. मतलब black लिखा हुआ है black है, spelling जो है वो black है, ठीक है, but it is written with blue color. It is written black but it is written with blue color. तो ऐसे बहुत सारे कलर्स है उनके, मतलब इनकॉन्ग्रुएंट इन कलर्स होते हैं जिनके नाम हमें रीड करने होते हैं, और टिपिकली लेफ्ट लोब फ्रंटल लोब इज मोर एक्टिव देन राइट फ्रंटल लोब while doing this activity. Then the last one is Tower of London test. It evaluates planning and problem solving abilities. Involves rearranging balls on text to achieve a specific goal with fewest movements. It measures the capacity to plan and execute a sequence of steps to reach a goal. What are the instructions that are given? Please rearrange the balls on the pegs so that each peg has one ball only. Use as few movements as possible. Then, what are the diseases commonly associated with frontal lobe lesions? First is head injuries, which can be traumatic brain injury, gunshot wound, closed head injury, frontal lobe vulnerability, or it can include contusions and intracerebral hematomas. Okay. Then there is seizures affecting frontal lobe, which is मतलब usually ये trauma के बाद ही होता है. चैलेंजिंग टू डायग्नोज ड्यू टू अनयूजुअल सिम्टम्स, जैसे कि बहुत ज्यादा हंसना या रोना या वर्बल ऑटोमेटिज्म या कॉम्प्लेक्स जेस्चर्स. देन वेस्कुलर डिसीजेस आर देयर व्हिच इज कॉमनली फाउंड इन एल्डरली. एरियाज ऑफ डैमेज आर यूजुअली एसीए, एमसीए. एसीए is anterior cerebral artery. So ACA territory infarction, which is like, इसमें क्या होता है, इसमें मीडियल फ्रंटल एरिया डैमेज होता है. एमसीए विच इज मिडल सेरिब्रल आर्टरी टेरिटरी, उसमें डॉर्सोलेटरल फ्रंटल लोब डैमेज होता है. और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एन्यूरिज्म रप्चर, इसमें क्या देखने को मिलता है? पर्सनालिटी चेंज और इमोशनल डिस्टर्बेंस. इन तीनों में ऑलमोस्ट एक देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग मोटर मूवमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम. देन ट्यूमर्स में आ गया ग्लियोमास एंड मेनिंजियोमास. Then subfrontal and olfactory group meningiomas linked to profound personality changes and dementia. Then there can be multiple sclerosis, which is like second highest number of plaques in the frontal lobe. Symptoms include euphoric or depressed mood, memory problems, cognitive and behavioral effects. देन डीजनरेटिव डिसीजेस भी कॉज होती हैं कुछ, जैसे कि फिक्स डिसीज जिससे बिहेवियरल और कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं. लॉस ऑफ इनहिबिशन मीन्स exhibit socially inappropriate behavior. Empathy, you already know, it means lack of interest or motivation. Loss of empathy, then compulsive behaviors are there, change in diet or mouth-centered behaviors, loss of executive functioning. Then Huntington's disease में क्या होता है? This is a hereditary neurodegenerative disorder. Common symptoms include involuntary movement, which we call as chorea. Then cognitive decline is there. Psychiatric symptoms might include behavioral change, which can include irritability, depression, and Impulsivity. Then infectious diseases affecting frontal lobe. First one is neurosyphilis. ये एक syphilis infection होता है which affect nervous system and can lead to diverse neurological and psychiatric symptoms. Then herpes simplex encephalitis. This is an infection caused by herpes simplex virus which affects brain and can lead to change in behavior and cognition. And psychiatric illness में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? डिप्रेशन, जैसे कि एपेथी या पुअर इंसाइट. सिजोफ्रेनिया में जैसे कि फ्रंटल एक्टिवेशन और अराउजल. ओसीडी which is like executive control. In terms of executive control we are talking. पीटीएसडी में क्या होता है? इमोशनल प्रोसेसिंग अफेक्ट होती है. एडीएचडी में क्या होता है? इम्पेयरमेंट इन अटेंशन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस are key features of ADHD and it involves the frontal lobes. Okay, so that was it for today's video. तो हमने आज फ्रंटल लोब डिटेल में कवर किया है.
हमने इसके मेन दो पार्ट जो हमने पढ़े हैं वो है प्री मोटर कॉर्टेक्स, सॉरी मोटर कॉर्टेक्स देन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। मोटर कॉर्टेक्स में हमने प्री मोटर भी कवर किया, देन हमने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी डिटेल में कवर किया, ब्रोकाज एरिया भी। So these all are very much important. If you have any doubt related to frontal lobe, please do ask in the comment section. And if you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and please do subscribe to my channel. Thank you so much for watching the video.